Hello friends, myself Bharat Soni welcomes you in the another session of biology class on behalf of Jawara Public School. So today a very important but very small topic I am introducing before you, and I am going to discuss the structure of chloroplast. As usual, the diagram is before you on the board. So let's start discussing the structure of chloroplast. Students, हमने अभी तक जो पढ़ा है न्यूट्रिशन पिछले सेशन में, उसमें न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और उस ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि प्लांट्स जो हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो सनलाइट they are getting from sun, carbon dioxide they are getting from air, water plants are getting from soil. But where is the chloroplast? Where is the chlorophyll? So chlorophyll is a green pigment, and this green pigment is present inside the chloroplast. chloroplast एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल स्ट्रक्चर के लिए, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in plants is handled by this structure that is called chloroplast. In the last session I just told you photosynthesis takes place in two important stages, that is light reaction and dark reaction. Okay, so these two steps are the very important steps in photosynthesis. Both this light reaction and dark reaction, these two reactions are carried out in this chloroplast. Chloroplast is a double layered structure. It is a bag like structure, you can see एक bag like structure होता है और double layered होता है. Here it has one outer layer and one inner layer. Both the layers are smooth layers. दोनों layers बहुत smooth होती हैं and little bit they are transparent. Transparent है क्योंकि light जो है वो इस transparent layers को cross करके ही अंदर जाएगी. Where chloroplasts are located? Chloroplasts कहाँ होते हैं? Chloroplasts are located in the mesophyll cells of the leaves. कहां होते हैं? क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स. तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं दे आर ग्रीन जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट हैव क्लोरोफिल. अब हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो होता कहां है. मैंने भी आपको बताया कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. टू लेयर्स यू कैन सी हियर. ये मैंने आपको कट किया हुआ पार्ट बताया हुआ है, लेकिन ये इस तरह का नहीं होता है. ये कंप्लीट बैग जो है वो चारों तरफ से बंद होता है. इट इज कवर्ड और पैक्ड फ्रॉम ऑल साइड. हियर नाउ हियर यू कैन सी इनसाइड दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर अ मैट्रिक्स इज फिल्ड. इट मींस इट इज नॉट एम्प्टी, इट इज फिल्ड विद अ मैट्रिक्स. जैसे सेल में होता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में एक लिक्विड, एक फ्लूइड होता है, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स. सो इट इज फिल्ड कंप्लीटली विद अ लिक्विड दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ओके, सो इनसाइड दिस मैट्रिक्स यू कैन सी सम डिफरेंट पाइल्स और द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स. ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहा जाता है थाइलेकॉइड. दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड थाइलेकॉइड डिस्क. और इन थाइलेकॉइड डिस्क के अंदर ही होता है क्लोरोफिल. क्लियर? नाउ दिस थाइलेकॉइड डिस्क आर नॉट सेपरेटेड. ये सेपरेट नहीं होती है. दे आर केप्ट वन ऑन अदर एंड मेकिंग अ पाइल. ऐसे कई सारे ग्रुप्स आपको दिख रहे होंगे, एंड ऑल दिस ग्रुप्स ऑफ द थाइलेकॉइड डिस्क आर कनेक्टेड टू ईच अदर. देयर इज अ कनेक्शन. यू कैन सी हियर ईच group of thylakoid disc is connected with the another group, and this connection is called lamellae. यहां मैंने लिखा नहीं है, but this connection between two different groups of the thylakoid disc is called
lamina. Laminae, a bridge we can say. Okay, and one complete bunch of the thylakoid disc is called granum. फ्रेंड्स, ये थाइलेकोइड डिस्क का एक ग्रुप है. इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेनम. और ये जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, यू कैन सी, यहां आपको 5 ग्रुप्स दिख रहे हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं. द प्लूरल ऑफ ग्रेनम इज ग्रेना. One group of the thylakoid disc is called granum, and all the groups of the thylakoid disc are together called grana. And इस ग्रेना के अलावा जो स्पेस है, it means the space inside the chloroplast where this grana are kept. This space is called stroma. जिस स्पेस में या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जगह है या जो उसका बेस है, जिस जगह पे थाइलेकोइड डिस्क रखी हुई है, लगी हुई है, चिपकी हुई है, जैसा हम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं स्ट्रोमा. ओके, सो दोनों चीजें हमारे लिए समझने के लिए जरूरी है, एक तो ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा. क्यों? क्योंकि जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, इट टेक्स प्लेस इन द ग्रेनम और द ग्रेना, एंड द डार्क रिएक्शन इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा पार्ट. तो दोनों ही अलग अलग प्रोसेसेस हैं. लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना में होता है, इट मींस थाइलेकोइड डिस्क में, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में चलता है. एंड बोथ दिस टू प्रोसेसेस कंस्टिट्यूट टुगेदर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ along with matrix and the thylakoid disc inside a chloroplast there are some other important parts or other important structures too. This structure, the dotted structure, you can see these dotted structures are called the ribosome, and as you know ribosomes are the protein factories of a cell. आपको मालूम है कि राइबोसोम्स क्या है? These are the protein factories of the cell. क्योंकि प्लांट्स हो या एनिमल्स, दोनों ही प्रकार की सेल्स में राइबोसोम्स होते हैं और यही बनता है प्रोटीन. Now along with the protein, here one more structure, very familiar structure it is there, a thread like double stranded structure, and this double stranded structure is called DNA. In cell, living all other organelles, only 2 organelles are there that have their independent or separate DNA. One is chloroplast and the other one is mitochondria. सिर्फ 2 ही ऑर्गेनल होते हैं किसी भी सेल में जिनमें अपना खुद का डीएनए होता है. उसमें से एक क्लोरोप्लास्ट है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है. सो हियर दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ chloroplast. Then you can see along in this structure 2 more structures or the dots. These dots are the starch grain. It means after the completion of the photosynthetic reaction, when glucose is formed, glucose is converted into starch. It means inside the plants also the manufactured food or the synthesized food is stored in the form of starch grain. So friends, this is the complete structure of a chloroplast, and chloroplasts are present only in the green part of the plants. These are totally absent in the animal cells. Clear? So friends, this is all for now, and we will be meeting in the next session and the next part of our life process chapter. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.